alaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience, and it's quite an honor and a privilege because the founding director of the South Asia Center at the Atlantic Council, Mr. Shuja Nawaz, is here with us. और आज हम इनकी किताब Battle for Pakistan, जो इन्होंने मुझे बोला जाके पढ़ो, और मैंने एक हफ्ते में पढ़ी है. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, all well. आप सुनाएं. सर, हमने डिस्कस तो आपकी बुक करनी थी, लेकिन आज ही आपके बारे में एक टीवी एंकर ने एक साजिश का जिक्र किया है. हारून रशीद कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश प्रूव हो जाती है बिकॉज अटलांटिक काउंसिल ने अब मिफ्ता इस्माइल को बुला लिया है. जी, ये गलत खबर है, इसलिए कि उज़ैर यूनुस जो कि डायरेक्टर है पाकिस्तान इनिशिएटिव के, उन्होंने इसकी तरदीद की है और एक ट्वीट में उन्होंने बयान किया है कि ये जो इनविटेशन थी ये शौकत तरीन को गई थी और फरवरी में, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्प्रिंग मीटिंग्स IMF वर्ल्ड बैंक की होनी है और इस दौरान हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं. बल्कि अटलांटिक काउंसिल ने इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था और फिर मिफ्ता इस्माइल को उनके साथ एक मीटिंग हुई. तो क्योंकि हुकूमत तब्दील हो चुकी थी, इसलिए नए फाइनेंस मिनिस्टर को वही इनविटेशन मिला और उन्होंने एक्सेप्ट किया. उज़ैर यूनुस मेरे ख्याल से सर कोकोमो में बिक गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. थोड़ा सॉरी, टंग इन चीक हमने स्टार्ट किया. आपकी किताब जब मैंने पढ़ी, आई थिंक द आइडिया के लेटर गेट को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कितना कॉमन होता है, वो ज़्यादा ही इंट्रेंच हो गया मेरे दिमाग में, क्योंकि US पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो बातें एक दूसरे के बारे में कही गई है. आई लव टू गेट योर टेक ऑन दिस आइडिया एज वेल कि इमरान खान जो इतना बड़ा चढ़ा के डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट को पेश कर रहे हैं in the context of everything that you know in terms of the US-Pak relationship, ये अमेरिकन कंस्पिरेसी, ये लेटर गेट, ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल रेटरिक है या आपको लगता है कोई एक आउंस भी सच्चाई है इसमें? नहीं, हमेशा आउंस से ज़्यादा ही सच्चाई होती है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इतना प्रूफ है कि कोई कंस्पिरेसी थी. इसलिए कि कंस्पिरेसी में शामिल होने के लिए मुल्क के अंदर अनासर जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो कौन थे और वो क्या कर रहे थे ये किसी ने नहीं बताया. ना ही हमने वो ख़त या उसके वो हिस्से देखे हैं कि एग्जैक्टली एम्बेसडर असद मजीद ने क्या उसमें कहा हुकूमत को, क्योंकि जाहिर है कि जब एक इनफॉर्मल सेशन होती है और ये क्योंकि लंच था जिसमें कि रिपोर्टेडली 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक तो डिफेंस अटैचे थे और फिर डेप्यूटी जो थे एम्बेसडर असद मजीद के वो भी शामिल थे, और डॉन लू जो कि काफ़ी गुजा हुआ डिप्लोमेट है. एम्बेसडर असद मजीद भी काफ़ी एक्सपीरियंस डिप्लोमेट है और वाशिंगटन में भी इन्होंने इनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है. तो जब ख़ास तौर पे खाने पीने का वक्त जब आता है और ये लंच था, तो कई मेरे अमेरिकन जानने वाले जो हैं डिप्लोमेट्स, उन्होंने मुझे यही बताया है कि एक अनरिटन रूल होता है कि यू नेवर पास a serious or severe message when food is being served. तो ये समझना ज़रूरी है कि बहुत तरीके होते हैं मैसेजेस पास करने के, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन दी जाती है. इस तरह नहीं कि आप लंच में बैठे हो और बातचीत होते हुए कुछ कहें कि आप बाज आ जाएं, लेकिन अगर ना हुआ तो ये होगा. आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज दिया था ट्वीट में जनवरी में आफ्टर ही टुक ओवर. दैट वाज अ डायरेक्ट मैसेज और वो पैगाम पहुंच गया था पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इनवाइट किया और वो पब्लिक रिलेशंस के नज़र में बहुत सक्सेसफुल विजिट थी, क्योंकि 4 मीटिंग्स हुई इमरान खान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ. लेकिन उनका नतीजा क्या हुआ? 0, क्योंकि पाकिस्तान वही का वही रहा. जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक है या ताल्लुकात बेहतर होने का ताल्लुक है,
तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं आया। वो डायरेक्ट एक रिलेशनशिप थी बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसमें थोड़ी बहुत फैन का भी एलिमेंट था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड अ पर्सनालिटी, उनका एक पर्सोना था एज ए क्रिकेटर ऑल्सो। हालांकि ट्रंप को क्रिकेट के बारे में ज़ीरो पता है, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ मिलके बहुत खुश होता था जो कि सेलिब्रिटीज थे। पॉपुलैरिटी, तो ट्वीट्स, जी रिट्वीट्स मिलती है उनको। जी, और उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी यही था कि ब्रीफ मैसेजेस वाया ट्वीट। तो फिर ट्विटर ने उसको बैन कर दिया क्योंकि गलत किस्म की इंफॉर्मेशन भी अभी वो इलॉन भाई वापस ले आएंगे फैला। उनको। देखिए देखिए क्योंकि अब तो प्राइवेट कंपनी है ट्विटर, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर अब मैंने थोड़ा खुद भी सस आउट करने की कोशिश की थी वॉशिंगटन सर्कल्स में। अमेरिकन थिंक टैंक से मुझे जो फीडबैक मिला है वो यही है कि इस वक्त अमेरिका का कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका इज लुकिंग एल्सवेयर। इस बात में सदाकत है कि अभी अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है वाकई पाकिस्तान में? अमेरिका का हम हमेशा इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान में। वो इसलिए कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री और एक ख़ास जगह पे वाक़ है। अ, वो नेबरहुड आप देखिए कि एक तरफ भारत, एक तरफ चीन, रूस करीब है, सेंट्रल एशिया है, अफ़गानिस्तान है, और फिर ईरान है, और फिर खलीज है। तो ये कहना कि अमेरिका का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, ये गलत होगी बात मेरे नज़दीक। अमेरिका का हमेशा इंटरेस्ट होता है, लेकिन अमेरिका की एक एबिलिटी जो है ना टू हैंडल मोर देन वन क्राइसिस एट अ टाइम, वो जरा शक में प्रायोरिटी वाज अ बेटर वर्ड दैट आई शुड हैव यूज्ड, जी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी नहीं है। और ना ही पाकिस्तान के कोई चैंपियंस हैं वाशिंगटन में, इनसाइड द बेल्टवे एडमिनिस्ट्रेशन में, या वाइट हाउस में ख़ास तौर पे, या कैपिटल हिल पे। अब मैं 1975 से इस यहाँ पे मुकीम हूँ, और मैंने बहुत से तब्दीलियाँ देखी हैं, लेकिन मुझे कुछ इल्म है कि वाशिंगटन कैसे काम करता है, और वो अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं ना, हाउ द सॉसेज इज मेड। और द ट्रूथ इज इट्स नॉट अ प्रिटी साइट, क्योंकि हम समझते हैं कि बड़ी एक यूनिफाइड, वेल कोऑर्डिनेटेड, ब्यूटिफुली ऑयल्ड मशीन अमेरिकन हुकूमत की है, जो कि तमाम कोऑर्डिनेशन करके, कोलैबोरेट करके, और फिर देखते हैं कि आज हमने पाकिस्तान के साथ क्या करना है। असलियत जो है इससे बहुत दूर है। इसलिए कि मेरी किताब में भी आपने अभी स्पीड रीड की है इस हफ्ते में, आई एम सॉरी फॉर यू। मैंने एक्चुअली बट यू काफी नो गौर से पढ़ी है इस हफ्ते। जी, लेकिन आपको याद होगा एक हिस्सा था जब अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा था मैं, तो बेस्ड ऑन माय इंटरव्यूज, और मेरे सारे जी जी। डायरेक्ट इंटरव्यूज थे, एंड उनको नेबरहुड भी नहीं पता था पाकिस्तान कहाँ है। predominantly on the record, मतलब I have recordings of all these interviews or transcripts, तो nobody can say कि मैंने ये नहीं कहा या मेरा ये मतलब नहीं था। तो एक चीज जिसपे के कॉन्स्टेंटली रेपिटेशन थी मुख्तलिफ की प्लेयर्स की, वो ये थी कि अफगानिस्तान के मामले में एक जंग नहीं लड़ रहे थे अमेरिकन, 10 जंगें थी। और ये शुरू हुआ जब ट्रांजिशन हुई सदर बुश से सदर ओबामा की। तो वाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जनरल डग लूट, ही वाज अ सर्विंग 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, और ही वाज रिस्पांसिबल फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बाद में फिर उनका एक्सपैंड करके साउथ एशिया भी हो गया। तो उन्होंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की थी ट्रांजिशन टीम को, सदर ओबामा की ट्रांजिशन टीम को, उसका टाइटल था 10 wars. There were 10 separate wars being fought by the Americans, by NATO, by different parts of the US government. CIA के अपनी जंग थी,
they were relying on drones, or Obama के term में the drone attacks increased multiples of the Bush administration because CIA thought that they were effective. They helped recruit people to the opposition, to the insurrection. लेकिन और पाकिस्तान में भी TTP जब बनी तो बैतुल्ला मसूद ने कहा था कि जब ड्रोन अटैक होता है तो मेरी रिक्रूटमेंट बढ़ जाती है. उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, स्टेट डिपार्टमेंट, कैपिटल हिल, वाइट हाउस और ट्रेजरी बहुत अहम है हिस्सा, क्योंकि वो सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करते हैं और वहाँ पे उनका काफ़ी तसल्लुत है, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में. तो अगर इनकी कोलैबोरेशन आप देखें या लैक ऑफ कोलैबोरेशन, तो फिर समझ आती है कि ये 10 जंगें क्यों हो रही थी. और इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को समझना कि वो कोऑर्डिनेटेड एक conspiracy even within the US government is very tough to manage. I think एक एनेक्डोट भी था, अगर मुझे सही इतना याद है, was it about the Gurkhas where they said कि वो पाकिस्तान में हेल्प करेंगे and they said वो पाकिस्तान में है भी नहीं, and then somebody said चलो वो मुस्लिम तो है, and then they were like वो मुस्लिम भी नहीं है. तो उनको ये तो उनकी लेवल ऑफ नॉलेज थी. इसमें बेसिक दोनों लाइंस के अगर हम नैरेटिव्स लें, ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट कभी भी नहीं होता, ग्रे में ही ट्रूथ होगा, बट आई लव टू गेट योर टेक कि वो कितने ग्रे में ब्लैक कितना है और वाइट कितना है. यूएस कहेगा हमारे साथ डबल गेम कर दी, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट कर दिया. पाकिस्तान का नैरेटिव है कि यार हमने तो आपको सब दे दिया, एंड देन वी गॉट the brunt of it. Our soldiers died. There were bombs in our cities. We paid the actual price for your war. Whereas the US will look at it in numbers कि हमने आपको इतने पैसे दिए, हमें क्या मिला. इन दो ब्लैक और वाइट के बीच में आपको क्या लगता है, ग्रे कहाँ फॉल करता है? ये दोनों सही भी कहते हैं और गलत भी कहते हैं, क्योंकि there is an exaggeration on both sides. Pakistan obviously had to hedge its bets, क्योंकि Pakistan was going to be a permanent part of the landscape. Pakistan उस neighborhood में रहता है, अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, और Pakistan was concerned about India also, कि अफगानिस्तान में उनका क्या इन्फ्लुएंस है. इंडिया ने $3 बिलियन तकरीबन इकोनॉमिक एड दी थी अफगानिस्तान को. पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में कोई $300 मिलियन दी थी, which is a lot for a small country like Pakistan. लेकिन all these things matter. उसके अलावा अमेरिका को जो चाहिए था कि पाकिस्तान की जिन चीज़ों में मदद करे वो नहीं की. आप ये डॉलर अमाउंट्स ही देख लें कि जो टोटल असिस्टेंस मिली थी पाकिस्तान को, the majority of it was coalition support funds, जो कि reimbursements थे for expenditures that Pakistan had reportedly made. और उस पे झगड़ा होता था कि नहीं आपने ये नहीं खर्च किया, या ये गलत बयानी की है, या इसके अकाउंट सही नहीं है, एटसेट्रा. वो इसलिए कि पाकिस्तान के अकाउंटिंग सिस्टम्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये मैंने किताब में भी लिखा है, were not the most advanced. The ability to by design or by inaptitude? No, simply because the Pakistan military has never really been forced into adopting the budget as a management tool. When you don't have a control over your budget, you spend money and you present the bill, and the finance ministry, the defense ministry signs off, and the finance ministry pays you the amount. तो फिर वो मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रहता. जो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जो कि मॉडर्न आर्मीज में एट द प्लेटून लेवल, एट द कंपनी लेवल, एट द रेजिमेंट, ब्रिगेड, डिव, कोर लेवल, everyone exercises that, or budgeting is a very important management tool. Pakistan Army has not developed that culture. So इसमें जो सॉरी मैं आपको सिर्फ इंटरजेक्ट कर रहा हूँ जस्ट टू गेट अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस. आपने जो एक किसी अमेरिकन की राय भी लिखी थी कि CSF का बजट हमें पता नहीं है कहाँ जा रहा है, और साथ हेलीकॉप्टर्स की जो बेसिक मेंटेनेंस है वो भी नहीं हो रही है. Is what is being alluded towards is corruption within where the CSF budget is going in the military? No, I would say it is more inefficiency.
It was more inefficiency because the way the accounts were being, according to my knowledge, because I spoke to some people that actually were putting these accounts together, they were basically cutting and pasting previous year's expenditures to get to a certain amount, ताकि उसी ballpark figure का मतलब repeat कर रहे थे. So like every company in Pakistan. When you don't have the numbers, you make them up within that acceptable level. I don't think कोई conspiracy थी पाकिस्तान की तरफ से कि अमेरिका को किसी तरह धोखा दिया जाए. They were simply trying to meet the demands. और अमेरिकन सफारत खाने में एक दफ्तर था ODRP जो कि Office of Defense Representative in Pakistan. Even they recognize these weaknesses और उन पे भी तोहमत लगी अमेरिकन हुकूमत की तरफ से कि आपने अपना काम ठीक नहीं किया. मैंने वो टेनी रिपोर्ट का जो जिक्र किया उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने तनकीद की कि the US representatives weren't paying attention and weren't demanding clarifications or documentation, etc. तो मुझे खुद याद है कि ज़ाती तौर पे मुझे एम्बेसडर होलब्रुक ने पूछा एक दफ़ा. उन्होंने कहा कि why is it that the Pakistan military has exactly the same amount spent on barbed wire every year? So I said, I don't know, but I can give you a guess. और वो ये है कि पाकिस्तान की cantonments have never been under attack. And there are many cantonments and they are wide open. So it could well be that, they are progressively cordoning off all the cantonments. और ये वजह है कि barbed wire की demand हर साल आ रही है. और nobody has actually sat down and measured कि कितने गज तार लगेगी. लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पिछले साल इतनी लगी थी तो इस साल भी तकरीबन उतनी होगी. So that would be my explanation, and he was satisfied with that. I told him, मैंने कहा आपके अपने इतने advanced budgeting systems हैं, but you don't know a lot of what gets spent. Billions of dollars is unaccounted for. और ये इराक की जंग में आप देख लें, $29 billion was lost. Nobody knows where it went. It went into some banks in Lebanon and then disappeared. So I think some Americans understood this and they worked with it. लेकिन जो अमेरिकन ऑफिसर खास तौर पे और CIA के लोग जो थे अफगानिस्तान में, who had colleagues that were killed and that the attack was linked to Pakistan-based groups, they, because of a long exposure to this, वो लोगों ने 3-3, 4-4 tours of duty किए थे अफगानिस्तान में, और सब पे यही रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान-based groups are attacking. खास तौर पे high profile attacks जो काबुल में होते थे हकानी नेटवर्क के, they were blamed on Pakistan. So this is a fact, right? The ISI did in a midnight helicopter operation get Haqqani network out. It wasn't just the Haqqani network. There were people in other parts of Afghanistan that were evacuated with the knowledge of the Americans. That is my understanding. President Musharraf had sought that because they had been assisting the Taliban in their different operations. The main thing is that there was a very large and growing number of Americans who had served in the region, who had developed this kind of permanent view that Pakistan was not just an ally, it was also an enemy. Because it was supporting these groups. And that's where the problem was. लेकिन अमेरिका की short term approach ये थी कि operationally हमें पाकिस्तान को अपनी साइड पे रखना है, इसलिए जो कुछ कर सकते हैं करें. लेकिन मेरी अपनी तनकीद अमेरिका की ये थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वो टूल्स नहीं दिए जो कि बहुत ज़रूरी थे पाकिस्तान को to fight terrorism within its own borders.
तो जब TTP वजूद में आई और फाता में पाकिस्तान मिलिट्री वाज वेरी इमोबाइल, सड़कें थी नहीं और इनके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं थे और helicopters would have allowed them mobility in terms of patrolling, attacking, whatever, or to carry troops from one point to the other. The United States never provided enough helicopters to Pakistan. और जो दिए भी वो भी मांग के सोवियत era helicopters जिनकी मेंटेनेंस में इतना वक्त लगता था कि they were not very effective. The Pakistanis would extend the period between maintenance. So this is what is referred to in the critiques of the Americans. इसमें drone attacks में भी तो they did act on Pakistani intelligence, जिसमें some of our targets also were drawn by America, जो हमने उनको बोला था करने को. Is that true? जी, ये एक किस्म की सौदागरी थी between the two sides कि आप हमारे लिए कुछ करें, and the Americans doled it out very carefully. They would ration out these actions which would help the Pakistanis. Or in fact, the majority of TTP targets that were eliminated were by American attacks, not by Pakistani action. This leadership के जो attacks थे. तो एक तरफ तो equation पे ये बात आ जाती थी कि America was helping Pakistan fight the TTP leadership. लेकिन उनकी रिक्रूटमेंट भी हो रही थी एंड दे हैड सैंक्चुरीज ऑन द अदर साइड और मैं बहुत अरसे से ये कह रहा था कि जब ये रिवर्स सैंक्चुरी हो गई और अफगानिस्तान में बेसिस बन गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू एंगेज विद द यूथ particularly. I wanted to ask this at the end, but since आपने already जिक्र कर दिया, geostrategically do you think we made a bad investment? Again, retrospect और hindsight में बातें कहना आसान है, between a rock and a hard place थे हम, but हमारी जो investment थी तालिबान में, अब जो TTP के हम resurgence देख रहे हैं, हमारे soldiers रोज border पे मर रहे हैं, was it maybe not the greatest of calls? I don't think so. I think you have to work with whatever exists in your neighborhood. Pakistan, unfortunately, some people in Pakistan took undue credit for the Taliban and their control over the Taliban, which was not true. Abhi bhi nahi sahi hai, kyunki they are a very independent people and the Taliban particularly resented the control, particularly of the ISI, because they felt that they were being dishonored by the fact that because someone is paying you, for your upkeep or looking after your wife and kids in Pakistani territory, because that's a safe place for them, and allowing you occasionally to come across the border, तो उनको ये हक नहीं पहुंचता कि आपको हुक्म दें. दूसरा, तालिबान की अपनी इंटरनल एक तब्दीली आ चुकी थी. वो ये थी कि काफ़ी फ़र्क था बिटवीन द फील्ड कमांडर्स एंड द तालिबान प्राइम, जो कि सो कॉल्ड क्वेटा शूरा या जो KP के इलाके में मुकीम थे तालिबान लीडरशिप, तो या फाता में, तो उनमें भी फ़र्क थे. और there was no way that the ISI or Pakistan could control all these elements. कुछ elements थे जिनके साथ इनके ज़्यादा ताल्लुकात थे, हकानी network definitely, लेकिन the so-called Quetta Shura I think was much more independent, and this was proven over time. So you did allude to this. मैं तेरे directly पूछ लेता हूँ. Maybe you're talking about General Hamid Gul and the things he said. सब स्पाई एजेंसी, सब मिलिट्री एजेंसी, सब इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने मुल्क के मफादात में चीज़ें करते हैं, बट यू फील कि ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा यूनिक है कि ये जब करने के बाद पब्लिक पर्सोना PR के लिए इंटरव्यूज देते हैं, इट सॉर्ट ऑफ हर्ट्स पाकिस्तान नैरेटिव व्हेन आवर ओन ex-ISI चीफ्स गो ऑन TV एंड से कि हमने अमेरिका के पैसे से अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी और हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं या हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये हर्ट होती है ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, एंड समटाइम्स दे प्रायोरिटाइज देयर पर्सनल PR ओवर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. I go back to
a famous American general saying about old soldiers that they should just fade away. I think this is very important, particularly for people that have headed intelligence agencies, because they no longer know exactly what's going on the ground. With all due respect to General Hamid Gul, and he did a lot of very useful things for Pakistani intelligence in the earlier war against the Soviets. He was really not that critical in terms of managing what was going on in Afghanistan. He was constantly trying to use whatever contacts that remained. Lekin I don't think he spoke for the Pakistan establishment. And so often, because, and he and I appeared on a number of programs, international programs, including for CNN and others, his views were constantly being seen by people in the West ke bahut influential hai or representative hai of the Pakistan military, which was probably not 100% true. I think he also went on public saying हमने बेनज़ीर की government गिराई है. These things, again, they put the institution in a bad light. Does the institution get in touch with these people and be like, please आप खामोश हो जाएं, या do they get a free rein? No, I'm sure they do. I'm sure they do. Lekin you're a free person, and Pakistan is still very much a free country in terms of freedom of speech, etc. There are consequences for some, lekin the institution itself protects people that have worn the uniform and have served the nation. If we go back to, I think, the most important part, अभी जब military की भी बात कर रहे थे, I might get these figures wrong because मैं याद कर रहा हूँ, I believe 14 साल में पाकिस्तान military का budget 18 billion था और American aid during that 8, 9, 10 year period was 8 billion. So mostly they were sustaining or at least contributing largely to our military budget. Well, because expenditures भी ज़्यादा थे ना. अपनी फौज की जो फाइटिंग कंपोनेंट था ज़्यादातर आपने वेस्टर्न बॉर्डर पे भेज दिया था. इंडिया के मुकाबिल जो फॉर्मेशंस थी वो बराए नाम थी काफ़ी हद तक. And I think we should be grateful that nothing emerged that would have led to some kind of a conflict with India during that period, because the numbers were all on the western border. You feel the US also called India and made sure that didn't happen on the eastern front? It's possible because the US needed Pakistan. Or this is, the bitter friendship in my subtitle. That, it was a friendship, but it was a bitter friendship because it had its highs and lows, and many times, the lows started defining the relationship. और ख़ास तौर पे जब आपकी फौज में casualties होनी शुरू हुई, particularly in Fatah, then the officers and the Jawans held America responsible for that. लेकिन आपने पहले जिक्र किया था about collaborating against the TTP. So there was a time, and I've quoted General Kiyani as confirming this, that there were US personnel on the ground in Pakistan working with the Pakistanis, जो कि identify करते थे targets, and then the drones would assist. Or I've also referred to the so-called Patri culture, where remote devices were thrown over walls into a compound. और आप देखें काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं उन लोगों के जिन्होंने उस इलाके में जाके आम लोगों से बातचीत की, कबायली इलाके में, फाता में, और वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे बेसिस बने या ये ग्रुप्स वहाँ पे आके और किराए पे घर ले, क्योंकि it brought American attention and bombings, and this was traumatic for the population. So there was a mixed feeling about it. लेकिन क्योंकि हुकूमत publicly कह रही थी कि they were opposed to these attacks,
while privately the various documents that have been released by Julian Assange and others show that they were saying yes to the Americans. और yes ही नहीं बल्कि moreover करके कि Yes, आप please. हाँ Yes, जितना please, कर more. सकते हैं Can I have some करें more? जी तो they were not telling the truth to their own public और उसकी वजह से आम पाकिस्तानी majority जो थी heartland में पंजाब में सिंध में कराची में they were convinced that America was playing a double game with Pakistan. And anti-Americanism jo thi, that was helping the government kind of get its support from the population. And the Americans, I guess, unki calculation ye thi ke this is the price for dealing with Pakistan. I think there are 2 chapters on what the Americans get wrong. US aid wala chapters में बहुत important है. And then even tracking के floods के बाद थोड़ी popularity बढ़ी थी. Let's not get into all of that. Since आपने laws का जिक्र किया है, it's equally frustrating and it's equally humbling to read the chapter on Salala, because when I started reading it, my initial inclination as a Pakistani was I almost felt shame for being a Pakistani कि हमारे soldiers को हमारे ally मारता है and we do nothing. We ठीक है हमने G-locks पे pressurize किया, and my inclination would have been to have that knee-jerk reaction कि बस खत्म करें अब तो हम ally नहीं होंगे. But then I read what Kiyani has done to take a bad situation and leverage and get something out of that. I see what Hina Rabbani Khar did on the diplomatic fronts to इतनी resistance के बाद, ओबामा की statements के बाद, उनकी military investigation हमें acknowledge तक नहीं कर रही, हमारी reports तक नहीं पढ़ रही, आप जाके उनको दे रहे हैं, वो पढ़ भी नहीं रहे, उनको पता है और वो उसको include नहीं कर रहे और जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं. उसके बावजूद diplomatic efforts करके she got Hillary Clinton to at least apologize and acknowledge. It's not going to bring back our soldiers, but at least that's something. So it also just makes me think maybe they're the right people, because मैं तो एक knee-jerk reaction करता. But I'd love to get your opinion and your take on Salala and what it meant for this relationship between Pakistan and the US. Salala was a sort of culmination. If you remember this year, 2011, कई चीजें हुई थी वहाँ पे, starting off with Raymond Davis, उसके बाद फिर जब वो मसला हल हुआ, फिर Abbottabad raid, फिर उसके बाद Memo Gate, तो the relationship was going into a downward spiral. और जब सलाला का ऑपरेशन हुआ तो मुझे बहुत हैरानगी हुई वो इस बात पे कि the Americans have known about this area for a long time, and it was only after the book came out that an American official approached me who had been with the team that had gone originally to assess Pakistan's needs after the Soviet invasion of Afghanistan. 79 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद 1980 में ये टीम गई थी. Or this official approached me at my club. He's a member there too. मेरी talk थी तो उसके बाद he said, I have some documents for you. और उसने बड़े खूबसूरत खुशखती में notes लिए थे उस अपनी पूरी visit पे पाकिस्तान की, और कहाँ वो गए, किससे बात हुई, क्या पाकिस्तान की needs थी to first of all defend itself अगर Soviets अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए, और फिर to use Pakistan as a base to launch operations. So a very interesting name popped out from there, Salala, because they flew over the border और identify किए मुख्तलिफ इलाके जहाँ से के ingress or egress होती है in across the border. 1979. 1980. Okay. 79 December में तो Soviets entered Afghanistan, तो following year पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई, और Salala was there, and I thought this is great. So Salala was on the map, literally and figuratively. The Americans knew the area, knew Pakistan's positions. उसके अलावा जो border coordination center था, वहाँ पे पाकिस्तानी officials थे, military officials.
who was supposed to be there and act as a liaison and a means of communication, etc. So it's not as if the Americans were totally blind कि क्या हो रहा है वहाँ पे. अगर आप accept भी करें कि उनका operation था on the Afghan side of the border, where there had been very little activity militarily. But they launched this operation, and then they took out these two posts, Pakistani's Volcano and Boulder, which was sitting right on top of the hill. और जो झंडा भी था पाकिस्तान का, it was not a small flag. It was, like a flag you see over car dealerships in America. गजों लंबा था झंडा. It could be seen. और जो उनकी अपनी description है कि जब उन्होंने air attacks किए, they dropped flares. So the night turned into day. This was their description. So if the night turned into day and they could see the Pakistani position, और दूसरा ये frontier corps के भी लोग नहीं थे. They were not in shalwar kameez. They were regular army units that had been sent there. So these people were easily identifiable as Pakistan military. लेकिन उनके मुताबिक किसी ने गलत ओवरलेज डाल दी कंप्यूटर में और 14 मील दूर बताया कि कोई फायरिंग हो रही है. But the standard operating procedures that had been agreed with Pakistan were कि the moment the other side says कि firing हो रही है हमारे पे, you stop and determine कि कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है. That didn't happen. So according to General Asif Yasin Malik, who was the co-commander, some Pakistanis were chased down into the ravines and shot. So this really captures जो मैं पहले बात कर रहा था कि for American soldiers and commanders who had served many times over in Afghanistan, there was almost a deep hatred for the Pakistan military, and that fed into this kind of operation. अब एक और बहुत अहम बात जो मुझे पता चली when I was investigating this Salala incident was that the ODRP, the Americans' own representative in Pakistan, who would normally be given advance notice of border operations, was kept dark. And then even more interesting, the fact that General John Allen, who was commanding troops in Afghanistan, वो और उनके साथ जो दो जर्नल थे, one of whom had signed off on this attack, were sitting in Rawalpindi completing their conversations with their counterparts GHQ में, और किसी ने जिक्र नहीं किया कि ये ऑपरेशन होने वाला है बॉर्डर पे. So a lot of very suspicious and grey activity. और एक लिहाज से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये गलती थी कि they refused to take part. If they had taken part in this, they would have raised these kinds of questions in the meetings, and then later they could have said, we are not party to the final report, and these are our reasons. But none of that happened. और जो आपने जिक्र किया, I was sent the briefing slides, and I made sure that they were approved because I didn't want to receive restricted information, and they were. I was told they were approved, and so क्योंकि मेरी NSC के साथ डायरेक्ट काफ़ी बातचीत होती रहती थी, I said to them कि आपने देखा है कि पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं कभी तक कोई खबर आई. तो मैंने कहा ये मैं आपको दे सकता हूँ, आप देख लें. This is the Pakistani position as of now. और ये early report है. But it didn't seem to feature क्योंकि बाद में जब जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया था रिपोर्ट के ऑथर को, तो he said that they didn't receive anything from Pakistan. So डायरेक्ट अगर मैं आपसे पूछ ही लूँ आपकी राय, फैक्ट्स यही हैं कि दे क्लेम डायरेक्ट फायरिंग बट कोई अमेरिकन नहीं मरा, 28 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे. आपने बुक में भी लिखा है कि जब जनरल मलिक उसके बाद अगले दिन भी गए तब भी फ्लैग वाज फ्लाइंग स्टिल हाई. नीचे कनाल में 100,000 फीट दूर लाशें मिली थी उनको. 28 हमारे सोल्जर मरे हैं, 13 इंजर हुए हैं. इज देयर एनी क्रीडेंस टू द US लाइन के
sometimes the Taliban uses Pak army uniforms, so हमें नहीं पता था. या would you say the best explanation is कि जिस तरह अबू गायरब में हुआ, जिस तरह विकीलीक्स में कोलैटरल मर्डर की जो वीडियो है, कि कभी-कभी errant soldiers, errant generals take part in military activities which may not be state sanctioned, which may not have direct approval. बस उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए डायरेक्टली पाकिस्तान को अटैक किया. मेरा यही शक है कि ये हुआ. It was not at the tactical level, but it went up the command level. और उस वक्त CENTCOM commander General Mattis थे, who was not going to expose any such activity. He's very Trump likes him careful. For that reason. No, he was very he's not at all like Trump. Okay. He's a very thoughtful, well-read. No, I said Trump likes him. Trump liked him for the wrong reasons. Okay. Trump liked him because Trump had heard that he was called Mad Dog Mattis, which he hated. This was not a sobriquet that he was proud of. He is a professional soldier, and I came to know him well, and I still know him well. And I have a lot of respect for professional soldiers of whatever uniform. So in his case, he was not going to, if this was something that was done at a lower level, that had a mistake as the basis, then he was not going to sacrifice his own colleagues in the interest of building a relationship with Pakistan. And he actually had also gone to Pakistan to deliver a message about the attack on the US Embassy in Kabul, with which the Americans suspected the Haqqanis were involved, with the knowledge of the ISI. So he had a position regarding Pakistan, which was not a very positive one because of that. So इसमें मैंने briefly General Kiyani का भी जिक्र किया था. In public perception, maybe because he's between Musharraf and Rahil Sharif, who are seen as these larger than life heroes almost outside of their military role. Public perception में corruption charges भी हैं, rumors भी हैं. शायद लोग उनको weak भी समझते हों. आपकी किताब पढ़कर हमें एक idea होता है कि how many things he was juggling. A lot of times he was a thinking general rather than a man of action, as Rahil Sharif is seen as. What is your opinion on Kiyani? I'm quite clear after reading the book, but I also want the public to know. And आपको क्यों लगता है कि public perception में he's not given the due credit that he should be given, considering all the things that he was balancing, while also having a semblance of a civilian government that he supported or at least did not overthrow? I have very little knowledge of the corruption charges. There is you also a lot. Mentioned कि rumors तो हैं. Yes, but I don't have research, or I haven't seen any documents or details of that. Guilt by association, yes. Members of his family have been mentioned, and he may have allowed that to happen. To some extent, one can control one's relatives. To some extent, one can't. Lekin, from a strictly military commander's perspective, I found him open. I found that he would read things. I found that he would think about issues and then follow up. Because I had met him a number of times on my visits to Pakistan, और जो कई बातें या जो सवाल मैंने किए होते हैं किसी पहली विजिट में, he would remember those and come back to them कि आपने ये कहा था, हमने ये किया है, etc. तो एक मतलब जवाब मिलता था आपको. There wasn't the bravado जो कि जनरल मुशर्रफ में थी. General Rahil Sharif was an instinctive kind of reactor, and he reacted very sharply जब उनके सिपाहियों पे अटैक्स हुए, खासतौर पे वजीरिस्तान में.
which the TTP probably didn't expect because they were used to Kiyani's more deliberate responses over time. और वो उसका भी मैंने जो नतीजा किया था वो ये था कि वो नहीं चाहते थे कि ये जंग सरहद से लेके पंजाब तक फ्रंट एक नया खुले, क्योंकि इस जंग में सिर्फ टीटीपी नहीं थे, उनके सपोर्टर्स भी थे जो कि पंजाब से थे और उनको रास्ता मिलता था नॉर्थ वजीरिस्तान से जाके और वो अफगानिस्तान में जंग करें। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मसला था, लेकिन Kiyani was highly respected by his colleagues in NATO and in the West. So the picture I got was of a very competent general, perhaps not someone who wanted to take a risky adventure by launching an operation against the TTP. And Raheel Sharif took the risk, and it worked for him. He managed to at least push them out. But in the process, he created a problem that exists even today. So you have to be able to think beyond the immediate. I think this is where Kiyani was building relationships and building a continuity in those relationships with allies in Afghanistan, in the theater, at NATO headquarters. और उनकी जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने कोट किए हैं काफ़ी एक्सटेंसिवली, वो पढ़ने वाली हैं, बिकॉज अभी तक अमेरिकन हुकूमत में जब लोग मेरे से सवाल करते हैं कि व्हाट डज पाकिस्तान वांट, तो आई टेल देम टू गो बैक एंड रीड द कियानी डॉक्यूमेंट्स। एक तो वो जो प्रेसिडेंट ओबामा को दी थी, और दूसरी वो जो कि सिविल में उन्होंने 10th एनिवर्सरी ऑफ 9/11 ही प्रेजेंटेड इट टू द चीफ्स, तो नेटो के चीफ्स को, और उसकी कॉपी सितंबर की 24 तारीख, आई थिंक सनीचर था, he gave to Mattis also when Mattis had gone to read him the riot act about the attack on the Kabul embassy of the US. He gave a copy to Mattis on that Saturday. So those are worthwhile documents because very honestly, he portrays all the American critiques of Pakistan and then tries to answer them. Obviously, he was not going to say guilty, guilty, guilty as charged, but he explains कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. The trouble was कि American side पे continuity नहीं थी. Kiyani was there for 6 years, so he had a clear vision कि पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा. American side पे मैंने वो एक टेबल पेश किया अपनी किताब में कि average tenure of a commander in Afghanistan of NATO forces was 13 months. तो 13 महीने जिसमें पहले 6 महीने आप समझते हैं कि क्या ये मुल्क है और क्या हो रहा है इस खत्ते में, और फिर दूसरे 6 महीने you're thinking about your future. तो and then you're suddenly removed for different reasons. ये नहीं था कि नाअहल जर्नल थे. They were superb military minds, highly trained people like Stan McChrystal and John Allen and so many trained professionals. Lekin the high command was using a kind of revolving door approach. और I explained कि अमेरिकन फौज में और पाकिस्तान की फौज में भी ये होता है, लेकिन अमेरिकन फौज में खास तौर पे उनका एक कमांडर का 100-day प्लान होता है. तो वो जब आते हैं कमांड में तो वो पूरी अपनी टीम लाते हैं, इंटेलिजेंस के भी लोग और ये भी लोग. अब ये when Stan McChrystal arrived, तो he brought his own team जो कि उनके साथ इराक में सोकॉम में काम कर रहे हैं. और वो सबसे पहले ये करते हैं कि पुराने लोगों को फारिग कर दें, उनके तमाम ख्यालात जो थे वो गलत थे, अब हम we'll sort things out. तो फिर एक स्टेटमेंट होती थी हर 2-3 महीने के बाद कि we are turning the corner, and that would try to raise confidence कि जी ठीक ठाक हो रहा है. और फिर 13 महीने के बाद उनकी रुखसती हो जाती थी, फिर एक नया बंदा आता था, उसका 100-day प्लान होता था, फिर नई टीम. तो
it was a very badly managed war. Yeah, and the mood depended on the mood in Washington. और उसके बरक्स कियानी साहब थे, who was there. He was thoughtful. He transformed the Pakistan military from being a static force into one that could fight an irregular war. Tamam training institutions में, Rahil Sharif was a part of that. I visited him in PMA in Kakul जब ये Major General थे, and he showed me what he had done. He even, क्योंकि American assistance नहीं आ रही थी, even used his German contacts. He set up an indoor firing range to assist the cadets in being able to fight a highly fluid situation against an enemy that was hiding in urban areas and so on. So he set up a complete course for that kind of operation. और जो इनकी war games भी जो करते थे, equivalent of war games cadets के लिए, they all involved this kind of activity. So he was responsible for training the younger officers, जो कि फिर फाता में जाके सर्व किए और बहुत शहीद भी हुए. So since पिछले तीनों discuss हो ही गए हैं, तो let's just also ask you this. Qamar, Javed, Bajwa is getting a lot of unfair criticism from ex-military men के उनको intervene करना चाहिए था या इमरान खान की हुकूमत को prop up करना चाहिए था. Do you have thoughts about this? I've only met him once for 3 hours, and I was very impressed. I was impressed because I found him to be thoughtful, balanced, asking questions, accepting answers. और दूसरा ये था कि this was at the beginning of his tenure. So, you know, people change, the position changes you. And he may have changed. I don't know. I haven't met him since. लेकिन he was also realistic enough. I think he realized, and he said so in so many words, that the Pakistan military is a very large institution, और इसका रुख तब्दील करना इतना आसान नहीं. It takes time. So he had the time. He was given 10 years. I don't know to what extent he has succeeded, quite frankly. And I don't know why things went the way they went. But, you know, you play the cards that you're dealt. Or Pakistan military obviously assisted in Imran's initial election victory. I can say that because I have spoken with people on the ground who told me about the approach that was made to them or their relatives or whatever. And decisions were made by candidates to either become independent या PTI join करें या election ना ही लड़ें. Is this before or after publishing? क्योंकि इसमें तो you make conclusions based on Imran Khan's popular vote के popular vote मिला और शरीफ और भुट्टो पाकिस्तान reject कर दिए. Even though all of us now know कि 2018 elections काफी engineered थे. नहीं, ये जो information है मुझे बाद में मिली when I talked to people about what happened in the elections. क्योंकि ये reports आ रही थी कि you know the military had provided support, and particularly the ISI at the sector commander level, at the div level, district level, was talking to people, encouraging them to do one thing or the other. Or बहुत सी चीजें were visible, you know, like at the DGC level, especially the declaration of a group of southern Punjab politicians to run as independents, for instance, so that they could hedge their bets. और जब election हो गई तो फिर वो हुकूमत में शामिल हो गए. So yes, there were decisions made, but इनकी choice क्या थी? फौज देख रही थी कि एक तरफ इमरान खान and his group, दूसरी तरफ electables, दूसरी तरफ PML and जिनके साथ but इनका it's not तजाद their था. choice. I know, but it's not their choice to make. You're absolutely right, and I agree with that. But from their point of view, the realistic assessment would have been, you know, what do we do? Nothing. And they went with Imran. Well, this is the problem, you know. There is no neutrality possible because somebody has to provide security, even for the elections. So if you recall, Kiyani also had
affected an election by saying that the Pakistan army will be neutral and will just provide security for the elections. So the statement of neutrality by itself becomes a factor. इसमें आई थिंक डीजी आईएसआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने अच्छी बात की, आईएसपीआर के जो स्पोक्समैन थे, कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम ए पॉलिटिकल होना चाहते हैं. आई थिंक ये खुशाइन बात है. ये हर चीफ कहता है. क्रॉस सोर्ड्स में आप देखिए, आई कोट माय ब्रदर्स फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे, आई हैव अ कॉपी ऑफ इट सिटिंग बिहाइंड मी इन द बुक शेल्फ. वो यही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आर्मी हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, but it's the largest, most organized force in the country. It's the most powerful institution in the country. And by very definition, it becomes political. The things you do and the things you don't do. और अब खास तौर पे क्योंकि रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है शहरों से और अंदरून शहर से, तो you have a very conservative organization. You have a youth that has been fed a particular line and a history and religious doctrine. I keep telling people, America, they constantly say, are they radicalized? I say, no. They're just very conservative. They have a very different view of themselves in the world. So you have to understand that. इस फौज में और उनके कमांडर्स में भी फर्क होगा. और दूसरा ये कि फाता में और बलूचिस्तान में जो एक्शंस हुए हैं, the number of people that have been lost in these actions, जो शहीद हुए, young cadets PMA से जाते थे, then the next thing you heard कि वो शहीद हो गए. So this has had an effect. People have done 4 or 5 tours of duty. This is no longer that old military of the parade ground. This is a military that has been fighting a war and losing friends and comrades and sons and daughters. So it's a very different force. So you mentioned your brother. मैं जब put up की post 3-4 लोगों ने यही सवाल पूछा कि somebody even said you still, I don't know if you've said it out publicly pehle, but people were wondering if you think Nawaz Sharif killed General Asif Nawaz Janjua. You just have to read my book. Nawaz Sharif साहब ने खुद भी मेरे से यही सवाल किया था. And I told him, मैंने कहा आपने मेरी किताब पढ़ी है? He said नहीं. मैंने कहा आपको मैं अगर दूं तो आप देखेंगे कि ज़रूर. तो मैंने वो अपेंडिक्स में हाईलाइट करके और उनको दी. और Ahsan Iqbal flew back from Rawalpindi from Lahore to Islamabad with us, and I gave him a copy also, and he gave it to Prime Minister Nawaz Sharif, and I hope he read that. I say quite unequivocally that there was no proof that I could gather that linked him to my brother's death. But there is proof that foul play ka to proof hai in the DNA, right? The only proof that I have is in the book, which is that I had his hair tested, and it was done anonymously through an arm's length relationship with a forensic pathologist who was world renowned. He sent it to the lab. The lab then sent me the results, and the results indicated a high level of arsenic, which in hair occurs over time. It's not as if you can dip the hair in arsenic, क्योंकि बालों में accumulate होता है. सर हमारा घंटा जो आपसे हमने मांगा था वो तो पूरा हो गया. लोगों के बहुत सवाल हैं. If you have 5 minutes, can we just do a quick question answer session? जरूर. Let's do a quick round robin. What is his opinion on the current split in the military? Maybe split is too strong a word. I think there are always differences of opinion, and it depends on the chief. Some chiefs allow debate openly within the formation commanders or the corps commanders. It's more likely that it occurs in the corps commanders meeting because they are all within a few courses of each other. Formation commanders काफी junior होते हैं. लेकिन अब क्योंकि the chief is in his second term, तो उनमें और उनके नए कोर कमांडर्स में भी काफ़ी फ़र्क होगा. और सितंबर में जो प्रमोशंस होंगी वो तो और भी दूर होंगे. तो वो रिलेशनशिप नहीं होगी, वो यकजहती नहीं होगी.
And खास तौर पे, and this is the reality, neither General Raheel Sharif nor General Bajwa had actually fought any of these actions in the border region. इनकी postings ऐसी थी that, they, if you command 10 Dib, you're sitting in Rawalpindi, you're not actually in the field. Like most of the new generals have all been through that mill. The mid-level commanders have all been through that mill. I sat in seminar rooms in the infantry school of वहाँ पे 10-11 अफसर होते थे, जिनमें 2-3 allied officers होते थे who had obviously no experience of fighting, लेकिन बाकी instructor और तमाम participants had been through Fatah once or at least twice. So that's a very different kind of army. And I think it's very important for the senior leadership of the army to realize that they have to change two things. One is the culture, so that you eliminate this element that, somehow when you reach a certain level, you are entitled to perquisites. And even beyond your retirement, you're entitled to perquisites, because that's not the case of professional soldiers anywhere in the world. Very few armies allow that to happen. So that will change the way the public looks at the military. The other is what I think General Bajwa has alluded to, but it's near the end of his term, so nothing will happen. So maybe the next chief will think about it. और वो है कि to convert the military from a predominantly old-fashioned static force, where they've changed some labels, but they haven't actually changed the force. So make it leaner and meaner and mobile, ताकि आपका बहुत बड़ा border है to the east and to the west, that you can protect it. लेकिन आपका खर्चा भी over time कम होगा. और खर्चा सबसे ज़्यादा क्या है, वो salaries and pensions. Even if the pensions are not part of the defense budget for reporting purposes, क्योंकि India removed them and then Pakistan followed suit in reporting to the IMF. But it doesn't change the reality. Reality is that people are now living to much older ages and they retire at a much earlier age. मैं तो हैरान होता हूँ कि जब फौज में भी people are now retiring in their 50s. So if the retirement ages are shifted, maybe that will help. Lekin, I remember asking my brother this question. This was 92 that we had this conversation. And he said कि अगर मैं कल भी फौज को आधा कर दूं, तो मेरा खर्चा नहीं कम होगा, because I have to look after those people for the rest of their lives. So pensions and salaries are the largest single component. Absolutely. How do you see this? How do you see South Asia in the next 5 years? I'm not good at predicting, and I hate to get into predictions because you don't know what you don't know. Lekin scenarios hai. Or kitab mein I have a chapter called Choices. Or jo American edition hai, which is an update, I added another epilogue on Imran Khan's tenure. So there you'll find some of the things that I didn't say in the edition that you have. So I think a lot depends on the political situation within the country. A lot depends on the clash जो कि centripetal or centrifugal forces में है. बहुत ज़रूरी है कि the center brings the provinces along and derives its strength from the provinces. So Balochistan and the former Fatah and KP and Sindh are as important as the Punjab in that respect. और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं of doing that. You can rebalance the political equation and the system. Maybe adopt the Nigerian or the Afghan model के जो अभी हम divisions कह रहे हैं उन सबको province कर दें. Obviously without all the paraphernalia of the province. Lekin for administrative purposes and for budgetary purposes, ताकि एक balanced polity हो जाए. और बहुत ज़रूरी है कि वो balance हो, क्योंकि otherwise there will be a constant conflict between the groups.
अब इस हुकूमत में इमरान खान की हुकूमत में भी इस तरह की प्रोविंस की बात की थी, बट आई थिंक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हैव बीन द बेन ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। तो बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कर दें ताकि एक बैलेंस्ड पॉलिटी हो, और जिस तरह के अफगानिस्तान में पहले मिसाके मिली होता था, इसी तरह पाकिस्तान में भी मिसाके मिली हो। इनसे तो सर लोकल लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करते ये लोग, आप प्रोविंसेस की बात करें, स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, लोकल लेकिन लोकल गवर्नमेंट लोकल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, वो नहीं करवाते ये लोग। हाँ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट्स की, बट ही डिडंट गिव देम फिस्कल ऑटोनॉमी। अब अमेरिका में मैं रहता हूँ, फेयरफैक्स काउंटी में, जस्ट आउटसाइड वाशिंगटन, इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट काउंटीज. It is responsible for raising its taxes. My real estate tax pays for the school system. It has one of the best school systems in the country. तो जब आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपे, तो people will hold them accountable at the local level. 100%। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि वो जब सदर मुशर्रफ के वक्त, फैसलाबाद had actually a system which was very effective. वो उनकी वेबसाइट थी जहाँ पे वो हर महीने फेरिस्त present करते थे of all the complaints that had been received and the issues that people wanted to be resolved, और फिर क्या नताइज हुए. So when there's accountability of that kind, you can over time build a good relationship. तो ये center और periphery और centripetal और centrifugal forces का जो तजाद है, इसको हल अगर करें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा. लेकिन अगर ये ना हुआ तो then the counterfactual is terrible. Yeah, I think center की जो insecurities हैं, I think they need to let go. The more you include people, the less disenfranchised they are, and the less chances of separatist movements. Thoughts on Balochistan? I think it's a podcast on its own, but maybe can we get some brief thoughts? Zurur. I think Balochistan and Fatah are very similar at a high level in that sense. Okay, you have to engage with the current population, or the current population is predominantly youth, और पढ़े लिखे यूथ हैं. उनकी तमाम लीडरशिप जो है पढ़े लिखे लोग हैं. I am amazed that we are unable to have a conversation. You can't continue to have the old system in place and then hope for better results. And there's no reason why young people in Balochistan or in Fatah are not part of the solution. If you involve them. I mean, recently एक बड़ा अच्छा article था रफीउल्लाह काकड़ का. Now he's not a Baloch, he's a Pakhtun from Balochistan, but he represents the same kind of demographic जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे अक्लमंद लोग हैं, who have got training, who have knowledge, but they feel they're not being heard. So Fatah में, I think I mentioned it in my book also, कोई तकरीबन 3 लाख male youth between 16 and 25. If we had only connected with them, created jobs for them, and given them opportunities, educational, health, agriculture. Lekin we always go for the more, to my mind, colonial solution. The colonial solutions, or the solutions that lead to elite capture. Yeah, special economic zones, or American Congress को भी convince कर रहे थे, और White House को भी कि your opportunity zones, let us set these up. उसमें होता ही है कि you have carpetbaggers coming in from the main provincial capitals making money, और जब वो tax advantages खत्म हो जाए तो वो they disappear. So you need to create it locally. अब बहुत अच्छी खबर मैंने पढ़ी थी पिछले हफ्ते कि पंजगुर में there is going to be a vertically integrated operation, जो कि they're growing date palms and then they will can and export them also from Balochistan to the Gulf. The same idea was presented to me in 2010 जब मैं गिरन शाह में 23 ट्राइबल मलिक्स के साथ मेरी मुलाकात हुई. तो they represented the Dawar and the Wazir tribe.
तो उन्होंने एग्जैक्टली ये प्लान मुझे कहा कि वी वांट टू हैव दिस, कि पानी का बंदोबस्त करें और छोटे डैम्स बनाएं ताकि हम डेट पाम्स जो है उनकी काश्त करें, when then we want to can them and export them because there is a market. Ask, he has a 2014 anecdote about the dharna. Ask him about that. इन्होंने बताया नहीं anecdote क्या है, if you know with what he's talking about. I need to be reminded क्योंकि ये किताब पे काम करना मैंने कुछ साल पहले खत्म किया था and I'm now working on new projects, so I don't know specifically what about Probably कोई आपके हम नाम जो हैं उनके बारे में ही होगा, if I'm to assume. It's probably something to do with Shuja Pasha, I'm not sure, but I don't remember as well. George Fulton हमारे दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं, do you think titles like his and so many concerning Pakistan geopolitics help perpetuate the global view of Pakistan being in constant crisis and anarchy? Examples like descent into chaos, Pakistan a hard country. I would differ with that. इसलिए कि I think I mentioned it in my introduction also. The people that know me, खास तौर पे जिनके साथ मैंने interact किया, they all accuse me of being an optimist. And even my family, keep making fun of me because I'm constantly looking for that opportunity. Or I am convinced that Pakistan has tremendous potential. It has the youth, it has very smart people, it has a middle class that will lead Pakistan out of the chaos that people have been talking about descending into. It's not an easy country, but that's the challenge. Agar paki pakai roti aapko mil jaye, to you become lazy, you become lotus eaters. I think Pakistan has an opportunity of transforming its demographic advantage, and the window for that is narrow. By 2030, 2035, you will not be among the younger countries in South Asia. Afghanistan will be the youngest. Climate change in demographic terms. Just Climate change. Climate change might not have 10 years even. And I've already launched a project we are looking at what I call the futures of Pakistan. It's a multiple. बहुत सी options हैं. पानी पे domestic water situation is even more critical than the cross-boundary situation, क्योंकि that is affected by climate change and glaciers melting and so on. And both India and Pakistan need to wake up to that common threat. Lekin domestically, you need to transform your agriculture. For instance, you need to have drip irrigation. You need to recharge the aquifers, which our Indian friends have helped destroy to some extent by giving free electricity and water to the Indian farmers. So they've been depleting your common aquifers. So that has to be done. You have to move away from relying on canal irrigation, which loses so much to the air in evaporation, etc. etc. तो बहुत से मुस्तकबिल हैं जो कि मुमकिन है. आपकी बिजनेस कम्युनिटी में तब्दीली आ रही है. पाकिस्तान के स्टार्टअप कल्चर जो है तब्दील हो रहा है. पिछले साल $300 मिलियन के स्टार्टअप्स हुए. इसको 3 बिलियन आप कर सकते हैं. और फिर ये कि when you are confident enough to open your borders with India and Afghanistan and connect to Central Asia, trade between India and Pakistan can go up to 100 billion a year. उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा. Ishrat Hussain did a wonderful paper for us when I was running the South Asia Center, जिसमें उन्होंने sector by sector analysis की. वो आप देख लीजिए, it's on the web, कि पाकिस्तान को इंडिया से ज़्यादा फायदा होगा because of this. And India will benefit, of course. लेकिन there will be a codependence between India and Pakistan. And when you have codependence, you don't have wars. So बहुत सी ऐसी चीजें हैं. Inevitable. So I'm an optimist.
about Pakistan. Either we move towards that future or we move towards annihilation. आखिरी सवाल सिर्फ ये, what is the future of civil military relationship in Pakistan given a change of government and ongoing crisis? अगर कत्ता कलामी माफ करें इसमें, मैं भी अगर एक ऐड कर दूं, I feel like कि मैं एक न्यूरो सर्जन के कमरे में जाके बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन क्या है ब्रेन सर्जरी पर, बट इफ आई जस्ट में कंक्लूजन में जब आप कहते हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन इसलिए भी है कि सिविल गवर्नमेंट जो है उन्होंने सिविल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, बट इसका भी इल्ज़ाम थोड़ा मिलिट्री इंटरवेंशन को ही नहीं जाएगा कि उनको बनाने ही नहीं देते सिविल इंस्टीट्यूशंस. इवन आफ्टर ज़ियाउल हक, द राउंड टेबल, द सीसॉ ऑफ गवर्नमेंट्स दैट वी हैड, जो बार बार 13-14 महीने में वो क्या ही कर सकते थे, एंड देन वी हैड 10 more years of military rule, and then we had 10 years of democracy, and then we had another hybrid regime. So yes, we're not blessed with the best civilian leaders. There is corruption, there is selfishness, but they're also not given a chance to entrench civilian institutions. And all this is correct. I don't disagree. I think the military has to stay its hand to resist the temptation to political engineer, to do political engineering. That's very critical. Uske alawa, I think civil society has to step up. The middle class in Pakistan has been like sheep. They just follow the leader. They keep switching allegiances from one side to the other. Or on top of that, the emerging business class needs to coalesce because they need to have ownership. They need to look at the world as their field, not just Pakistan, and work with civil society to assert their wish कि क्या चाहते हैं वो, किस किस्म की इकोनॉमी में वो रहना चाहते हैं, कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तालीम को कैसे तब्दील करेंगे, हेल्थ सेक्टर को कैसे तब्दील करेंगे. One great story that emerges out of the PTI experience was how Pakistan fought COVID. This is still sort of a cause of puzzlement. India में क्या हुआ और पाकिस्तान में क्या हुआ. So we are working on a plan to examine this, to see exactly how did it work. And that was a great example of civil military cooperation and collaboration, जिसमें कि कोई सियासत नहीं थी. I think that is the key, कि आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें सियासत ना हो, which is for the benefit of the people, because if you don't, then the prospects are dire. सियासत तो काफी हर चीज में सियासत होती है. आई डू बिलीव के अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आमिर आए हैं पाकिस्तान में, सिविल सोसाइटी को थोड़ा तो क्रेडिट जाता है. विदाउट पीपल लाइक अस्मा जहांगीर, विदाउट मूवमेंट्स लाइक औरत मार्च, पीटीएम, वी माइट जस्ट हैव बीन वर्स. तो सिविल सोसाइटी जब जब खड़ी हुई है पाकिस्तान में, whatever semblance of a democracy that we have, I think civil society in Pakistan does get a lot of credit for that. And the women of Pakistan, I should say, as a proud father of 3 daughters who are all professionals in their own field, the women of Pakistan have really taken it upon themselves against all odds. मैं समझता हूँ कि जो तरक्की उन्होंने की है, और ये बांग्लादेश का मॉडल पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा कि जब आप 50% अपनी आबादी जो है उसको शामिल करेंगे अपनी मईशत में, तो फिर तरक्की होगी, उसके बगैर नहीं हो सकती. और दूसरी और भी चीज़ें हैं बांग्लादेश के मॉडल में. Separating religion and the state is another one. Reverting to the 1947 warrant of precedence is another one. Civil military relationship के हवाले से तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए दूसरे ममालिक से. लेकिन I want to end on a positive note. मैंने recently एक convene किया था राउंड टेबल पानी पे, domestic water situation के क्या issues है, आगे क्या करना है पाकिस्तान को. तो I brought together an international group panel. ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, diaspora Pakistani, and almost half the group were women. These are Pakistani women who are doing incredibly brilliant work on water and related issues across the globe, and they are available as a resource to Pakistan.
100%. अगर कोई लेजिस्लेशन दे दे कि हम अगले 5-10 साल सब सारी कंट्रोल औरतों को दे देंगे, I'd be up for it. We men have not done a stellar job, but for all your services, all that you've done to record these things, जो palace intrigue में rumors तो होते हैं, but to find the evidence, and this is, and all the work that you do is for history, is for setting the record straight. Can't recommend it enough. Thank you so much, sir, for your time. It's a pleasure talking to you. बड़ी मेहरबानी. Thank you, sir. Thank you, everyone. Take care.